कि जितने घर की दीवारें ऊंची है उतनी चीजें सुनाई नहीं देती है। 1 out of 3 children in India experience any form of sexual abuse, and it is both genders. कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे दूर रखो। कहते हैं ना, ड्राइवर के साथ भेजने में डर लगेगा, लिफ्ट में चौकीदार के साथ भेजने में डर लगेगा। इट कुड बी द एज एजुकेटेड अपर कास्ट मेल लिविंग इन योर सोसाइटी हु माइट बी वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो स्लम में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आसपास सबको पता चल जाएगा। अपर क्लास फैमिलीज, थिंग्स विल नेवर कम आउट। एज अ थेरेपिस्ट आपके पास बहुत से लोग अपने इश्यूज लेके आते होंगे. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वंस नाउअडेज? Nowadays, there's a sudden shift in anxiety related to flying with the entire, Air India accident, very recent. In the last couple of months, a lot of people are reporting fear of flying. So anxiety के ही अलग-अलग तरीके हैं, रूप हैं that people show in. People are definitely showing up with more insomnia, कि नींद नहीं आती है. I feel very tired all the day. I'm not able to focus on things, so which is outcome of other mental health challenges. A lot of people, to me, very interestingly, are also reporting relational challenges. They're finding it difficult to find partners, or whom they are with, they are not comfortable. They feel lonely in relationships. They find it difficult to communicate with their partner. They are confused whether to go ahead for separation or to stay in the relationship. Um, a lot of relational problems within family, friends. So लोग हैं भी but मुझे नहीं पता कि क्या वो मेरे लिए है क्या. So finding it challenging there. But yeah, anxiety has been a common challenge across age groups. और वो हर एज के लिए अलग अलग दिख सकती है. So working population will speak about, they find it difficult to share their views, opinions, they're constantly confused, they feel extremely scared, they overthink, and in that process they start avoiding things, which results into maybe addiction, or them kind of choosing something which is very short term. Smoke ले लिया या एक beer पी लिया and you feel better. So anxiety shows up in different ways, and people are also experiencing a lot of health anxiety, which not very commonly talked about. And the health thing is more typical to solve with childs, right? Could be. बच्चे लोग तो ऐसा मतलब नहीं, वो बच्चे तो as an excuse use करते हैं, but a lot of adults come with health anxiety. That they become hypersensitive to every change in the body. अब शरीर है ना, शरीर को कुछ ना कुछ तो होगा, कभी ना कभी कोई बॉयल निकल सकता है, कहीं स्वेलिंग हो सकती है, आपको कहीं अभी आप नोटिस करोगे आपको 2-3 जगह दर्द हो रहा होगा, टेंशन हो रही होगी, राइट? बट their nervous system is very alert. So they feel like every small symptom or every small sensation in my body is an illness. So they have the urge to immediately show it to the doctor कि अगर स्किन पे रैश भी है कि क्यों हुआ होगा. So they will make an appointment. अब देखो, डॉक्टर के पास गए हो इंडिया में, कुछ ना कुछ तो बता ही देगा. They also have to sound useful. तो and it is very natural. They will give you something. तो उनका thought validate हो जाता है. हाँ, देखा, मुझे कुछ हुआ था. But it's not a physical health challenge. They're actually experiencing health anxiety. Anxiety, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओबेसिटी, ओवरथिंकिंग, ये चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड हैं? और डू यू थिंक जब लोग आपके पास आते हैं तो देयर इज ऑलवेज 2-3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू पिन पॉइंट दोज ओनली, लाइक मुझे एंग्जाइटी इश्यूज हैं, मुझे डिप्रेशन इश्यूज हैं, या मुझे ओवरथिंकिंग इश्यूज हैं, या मुझे इंसोम्निया है, बट जब आप उसको सॉर्ट करते हो प्रोबेबली 2, 3, 4, 5 सेशंस में, तो यू नैरो डाउन टू 1 or 2 or 3 पॉइंट्स व्हिच आर लाइक मेजर एनेक्डोट्स और मेजर पॉइंटर्स कि भाई ये सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, या सीड्स फॉर द एंजाइटी, डिप्रेशन और एटसेट्रा. Exactly. The solution is going towards the seed, understanding. क्योंकि हम क्विक फिक्स किसी चीज को दे सकते हैं, but it will be a quick fix. It will not be long term. So when you said that a lot of these challenges, like चाहे फिर health concerns हो, mental health challenges हो, stressors हो, difficulty with related to job, career, whatever we experience, they are interlinked. We live in a world where our lives are not private anymore. We live in a world where we are constantly on the go. We live in a world where we are performing. We are performative at many points of time in our lives.
So जो हमने पहले बात किया कि we don't slow down, we are not kind to ourselves, we don't acknowledge that it needs to be solved immediately, and not everything is about me and has to become a problem. Now there are also challenges that it's hard for people to talk about their emotional challenges. We live in a culture जहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट में बात किया फिजिकल हेल्थ के बारे में आप किसी को बता सकते हो, जैसे मम्मी मौसी को फलाना को बता सकती है कि अरे यार इसका पेट दुख रहा है, इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसको बुखार आ गया है. But very often we will never really listen to someone, अरे she's not been feeling up, she's been feeling depressed, she's been feeling anxious. So as a culture, we find it difficult to talk about mental health. One part is that. So when people come to us, they have already tried a lot to talk about it with someone else. Therapy is never their first resort. True. First, people want to go to their loved ones. They show signs. They will ask someone for a cup of coffee. या बोलेंगे यार तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है, किसी से झगड़ा करेंगे. वो सब करके आते हैं हमारे पास. So they feel like this कि सब कुछ immediately solve हो जाना चाहिए. और यही एक प्रॉब्लम है कि जैसे मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यही प्रॉब्लम है. मेरे को पैसा अच्छा नहीं मिलता है, ये मेरा प्रॉब्लम है. I feel angry at people, ये मेरा प्रॉब्लम. So we have to help them understand the overall feeling of their life. That a lot of things are contributing to what you're feeling. Your childhood, your people around you, the fact that you could not talk about it to anyone, the fact that you have felt so burdening with your problems कि यार मेरे को दूसरों को नहीं बताने हैं हमारे problems, उनको परेशानी हो जाएगी. lot of partners don't share कि यार मैं उसको क्यों बताऊं. और अगर इंडिया में बताओ भी अगर किसी फ्रेंड्स ग्रुप में, यार तू क्या सीरियस बातें लेके बैठा है, राइट? हम कोई भी इमोशनल बात को सीरियस बात बोल देते हैं, इंटेंस बोल देते हैं, और चाहे फिर हम एक ही जोक 50 बार मारे वो चलता है, दैट वन काइंड ऑफ जोक. सो द पॉइंट इज दैट पर्सन हैज फेल्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन दे कम टू अस एंड वी गिव दैट स्पेस टू देम, एंड दैट फील्स समटाइम्स एक्सट्रीमली लिबरेटिंग टू देम कि समवन इज गोइंग टू लिसन टू मी and not just identify what is the problem, but someone who will listen to me and understand me completely. Now imagine both of you. Someone is going to sit with you for 45, 50 to 60 minutes and just talk about you. Not your clothes, not the money that you make. They are not looking at, they are not judging आप किस कास्ट से हो, किस जेंडर के हो, किस क्लास से हो, आपने क्या किया है, आप कितने बड़े फेलियर हो या कितने सक्सेसफुल हो. They are neutral. They are looking at you because they want to get to know you. It feels extremely heartwarming. It has the power to make you feel seen and heard. And people love that. That is one part. And then they come, we help them understand what are the challenges in that process. कि आपने बोला कि आपको you feel underconfident and you're feeling anxious. Let's understand what all factors are contributing. Okay. What all factors are maintaining it. What are some of the things that you are doing are unhealthy coping mechanisms? What are the things that you could do better? What are your strengths? How we can build on your strengths? So therapy is like that weaving. बुनाई होती है ना, एक धागे के साथ you start weaving the entire story together, but the client is a part of it. So it's not the therapist कि I will look at you, I will tell you what are your problems and you will go away. And I will give you 5 things to do and सब ठीक हो जाएगा. काश ऐसा होता, नहीं होता है. We sit with them and we help them that let's do this together. So there is less chance of dependency. They should not feel dependent on their therapist. They should also feel that they are capable of doing their life by themselves. So people feel extremely liberated in therapy. They realize that I could be this person, I had no idea. I tell them, you are this person. You were always this person, but there were a lot of clouds that were blocking your vision. And we removed a lot of these clouds and here you are. Please go back to world and come back whenever you feel the need. So that's what therapy is. Today, we are living in an age of convenience, full of resources, like endless resources hai hamare paas, theek hai? Matlab, we are at a position, we are living a life that our previous generation can dream of, right? But mental problems, anxiety, depression, ये आज की डेट में पीक पर है. So मतलब contradiction है ना कि सब कुछ मिल चुका है हमें, but सबसे ज़्यादा stressed भी हम ही हैं. Like why this situation? So research, like we were just talking about it, right? Research suggests that human minds are not necessarily most at rest when they have everything. Okay. They are most at rest when they feel that they can do anything. There's a difference. So people can do anything means they're more confident about who they are.
they're comfortable with who they are, they recognize their flaws, they're kinder, they're more empathetic towards themselves and other people. They see life in not just in black and white, they see life in gray, right? They see the entire unpredictability of life. They're able to acknowledge that I will not be loved by everyone, but we have moved the other way around. We see that I should be liked by everyone, I should be loved by everyone, I should be always at my best. People are not able to be kind to themselves. That is one part. In this entire consumerism, capitalist economy, we constantly feel that we have to prove, we have to perform, and we have to constantly be outcome oriented. Now, that's one part. Second part, we have also started, kind of moving away from the ideology of slowing down, taking care of ourselves, really looking at what matters to us. So, a lot of young people who come to therapy talk about purposelessness or meaninglessness. एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, राइट, जो आपको बोलते हैं कि आप ये जब तक ये कमोडिटी आप लोगे नहीं तब तक इसका वैल्यू रहेगा, फिर उसका वैल्यू डिमिनिश होगा, राइट? डिमांड एंड सप्लाई. Demand and supply. So that entire feeling gets diminished. So a lot of people complain about purposelessness because they feel loss of connection with themselves, other people over a period of time. And of course, social media and everyone, I think, talks about it, plays a huge role. We are much more isolated than who we were. We have the language that I'm maybe alone, but I don't know what to do about it. True. People are feeling more lonelier over a period of time. Also, there is entire change in systems, right? हम जैसे पहले चीज़ों को देखते थे कि पहले हम देखते थे कि हाँ अब दिवाली आएगी, होली आएगी, समर वेकेशन आएगा. We had delayed gratification. मतलब चीज़ें immediately नहीं होती थी. It was spaced and we had to live with boredom. बोर हो रहे हो आप, मतलब I remember getting bored in my life and my mother did not solve it. It's okay, get bored. Actually, it's a very important thing. Human beings have to feel bored. We take our cell phones to the bathroom. Oh. I have realized that 80% of people take their cell phones to the bathroom. Now that in my head is like, I cannot like adjust to that thought itself, right? We cannot stay with ourselves. हम अपने थॉट के साथ रुकना ही नहीं चाहते हैं. जैसे हमारा थॉट अगर हमें अपने आप के साथ छोड़ दिया तो हम अपना क्या कर लेंगे, यू नो? वी कैनॉट स्टे विथ आवरसेल्व्स, वी कैनॉट लिसन टू आवरसेल्व्स. दूसरों की तो हम क्या सुनेंगे, राइट? सो हमारा जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन था वो कम हो गया है. वी वांट एवरीथिंग राइट हियर राइट नाउ एंड इन द वे वी वांट. That creates a lot of anxiety in people, right? ये कैब क्यों नहीं आई, फिर ये क्या सोचेगा, मुझे तो आज ही चाहिए था. And this entire thing, while it is great, 2 minutes delivery, 2 minutes life, but life doesn't work that way. When pain comes, it will take time to go away. When you lose a family member or a relationship, it will be hard. And we try to solve it too quick, too fast. So these are some of the things that have shifted the entire course of human behavior. And there are institutions like Harvard, Columbia, they are researching on it. They are researching how people are thinking about things differently. But in terms of practice, as you say, we have everything in terms of material, commodities, consumerism, but still there is a rise in mental health challenges. And by 2030, India is likely to lose $1.03 trillion to mental health challenges. Oh. That's the WHO data as well. So that means it is just the start. It is the tip of iceberg. There is much more happening. By 2030, we'll see depression as an epidemic. And we are going to experience that people are going to get lonelier. People are going to feel loss of meaning, purpose, connection, association with things. And I think we have to find ways to kind of slow down and look at it more carefully. But yeah, I kind of agree. Fine. I mean, I can understand this is a triangle sort of thing. But ऐसी क्या कंडीशन है जहाँ पे इंसान सुसाइड को एक सॉल्यूशन देखता है? मतलब ही और शी विल ऑप्ट एज एन सुसाइड कि भाई अब तो बस खत्म करना ही बचा है, अभी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है. Suicide is a huge mental health challenge in our country. Now, I'll start with first, suicide was पहले seen as a crime. एक criminal activity देखा जाता था. Recently, with the changes in the Mental Health Care Act, we have decriminalized suicide. कि हम suicide को as a crime नहीं, हम as a mental health condition देखते हैं अब. बट अगर आप सुसाइड को देखो एज अ फिनोमिनन, इट इज ऑल्सो अ सोशल पॉलिटिकल चैलेंज. जैसे हमारे देश में फार्मर्स सुसाइड हुआ है, हमारे देश में लोग जब कुछ उन्हें नहीं मिल पा रहा है सोशल सेटिंग्स के कारण, दे एंड अप टेकिंग देयर लाइव्स. नाउ टॉकिंग जस्ट अबाउट द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट, सिंस आई एम अ थेरेपिस्ट, आई विल फोकस ऑन दैट.
mental health challenges can lead to suicidal ideation because a person, it's not the choice actually. Suicide is never a choice. They feel it's the only way they can make themselves completely go away. Every other thing feels extremely difficult. They feel irrelevant. They feel they're not needed on this planet. They're not needed in this life. And they feel that they're a huge burden to everyone who loves them. So people who experience suicidal ideation, they are not doing it for attention. So this is also for all the people who are listening to us. In their life, कभी ना कभी उनको किसी ने बोला है, कल मैं अगर नहीं रही, तो तुम क्या करोगे? या tomorrow if I disappear, what will you find me? These are just their ways of telling you that something is making them feel completely unwanted and irrelevant. And if you look at human beings, they want to be wanted. हम ऐसे beings हैं, we are social beings. We want to feel connected, we want to feel needed, we want to feel wanted. So one is, of course, depressive thoughts can, when they go into an extreme chronic depression, they can result into suicidal ideation. A lot of personality disorders like borderline personality challenges or obsessive compulsive disorder or other mental health conditions में भी suicidal ideation आ सकता है. क्योंकि इंसान अपने बिहेवियर और इमोशंस के काबू में नहीं रहता है. दे कैनॉट रेगुलेट व्हाट दे आर फीलिंग. तो जैसे आप और मैं जिनको मेंटल हेल्थ चैलेंज या इलनेस नहीं है, हम शायद एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को अलग तरह से देखेंगे, बट उनके लाइफ में अगर स्ट्रेसर्स आए, दे मे एंड अप फीलिंग suicidal at that point of time. So suicide is never an option. They just feel that there is nothing else that can help them. What I feel is जो आज का यूथ है, जो यंग जनरेशन है, ये रिजेक्शन से बहुत डरता है. यू नो, जैसे हम अपने बड़े लोगों से, पेरेंट्स से सुनते थे कि अरे हमने 10 चीज़ें ट्राई की है, हमने 100 चीज़ें ट्राई की है, लोगों से ना सुनी है हमने, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं. बट व्हाट आई फील नाउ अडेज कि हमसे वो पहला स्टेप ही नहीं लिया जाता है. व्हाट इफ उसने ना बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर रही है. एंड व्हाई इट इज कि यूथ इतना डर चुकी है ना सुनने से. I completely agree with you that young people are scared to get a no या rejection, चाहे वो dating में हो, career में हो. One of the challenges is also that with the way we look at no. No means अगर हमें किसी ने reject किया है, we are trained to look at rejection as a sense of failure. And sense of failure is tied with low self-worth. कि if I fail, that means I'm not a good person or I'm not good enough. So basically, we are avoiding that not good enough feeling, not no. So rejection deep down tied है हमारे core belief के साथ, I am not good enough or I am not lovable or people only love me if I'm in a certain way. So people start looking at every rejection as a rejection to their core being. That's one part. Second, we don't look at rejection as just a part of our experience. We see that, for example, if someone rejects my profile for a particular show, they're not rejecting me as an entire person. Maybe I'm not a right fit for their program. But we right? feel that we are not a right person. फिर I will not just even feel I'm not a right person, I'm not a good psychologist. We tend to question everything that we have been doing all this while. So we quickly jump into these conclusions that I'm not good enough. So quick conclusions to these belief systems is one part. Second part is हमने no हमारे culture में बहुत अलग तरह से देखा है कि हमें हर जगह accept किया ही जाना चाहिए, हमें हर कोई पसंद आना ही चाहिए. So we have this need that we need to be perfect in everything that we do. We need to be liked by everyone. Everyone needs to love us. Now that if you have that as one of the real thing in your life, कि I need to be everything and everywhere, you're likely to feel a lot of rejection. You're likely to feel a lot of fear of rejection. And people also have fear of missing out because they have fear of rejection. So they also have FOMO that I then need to be, so they overcompensate. They over please people. वो हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, हर किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे. And that ends up feeling, of course, more tiring, right? So they're all connected to these things. Yeah. I guess it has a problem with the self-confidence and self-trust. Suppose अगर मुझे किसी ने reject कर दिया, तो it's like कि मैं हूँ ही ऐसा इंसान. Not like this कि कोई बात नहीं, उसने मुझे reject कर दिया, but मुझे मेरी worth पता है. Emotional handling, right? Yeah. Emotion handling actually. मतलब अभी बहुत बार ऐसा होता है कि यार someone has not answered my call.
सो मैं हम डायरेक्ट यही सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, हाँ। मतलब ये मैं उसका नेगेटिव ही सोचूंगा एज एन पर्सन। हम उसका जबकि हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो सकता है वो कहीं उसका बिजी एक और हो, कारण है हेमंत बहुत कि सारी हम चीजें सब हो बहुत सकती हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे है, जो मैं पहले बात कर रही थी। वी नीड थिंग्स इमीडिएटली। एक्चुअली। पेशेंस नहीं है पेशेंस नहीं, वी वांट कि सब हम एक तो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड फोन, दे फील लाइक एवरीवन शुड बी एट माय डिस्पेंस. ट्रू। If I've messaged, the person has to reply. There is no rule that a person has to reply within 3 or 4 hours. And I have seen that people come up with larger conclusions कि अच्छा ये तो reply ही नहीं करती, ये तो phone ही नहीं उठाती. Then they conclude about that person. That she's not available or she does not want to socialize. We draw conclusions about other people, about self, about the world. And we're too quick to jump to conclusions. We have become judgmental, to be very honest. We don't want to give people space to be themselves. Yeah. Yeah. हमारी एक्सपेक्टेशन ऊपर बहुत हाँ. बहुत ऊपर, दो वी मे नॉट डिलीवर, बट हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाँ. ऊपर है कि यार लोगों को तो मतलब मेरे एक फोन पे सब लोग अवेलेबल होना चाहिए, दे शुड रिप्लाई इमीडिएटली सॉर्ट ऑफ। बट देयर इज वन गुड एप्लीकेशन आल्सो, रिजेक्टो बोल के, जिसमें हम लोग मतलब डेली बेसिस पे 5-10 चैलेंजेस ले सकते हैं। Okay. हाँ, जिसको ये आदत नहीं है रिजेक्ट होने की, मुझे तो Oh, पर्सनली है, wow. बट अच्छा. ऐसा रिजेक्ट होने की कि भाई मैं रिजेक्ट कहाँ हो सकती हूँ या कहाँ हो सकता हूँ। सो आस्क योर नेबर फॉर समथिंग, हाँ. और आस्क समवन सम हेल्प। Wow. कहीं तो आप कहीं लाइफस्टाइल स्टोर पे हैं तो आप कुछ पूछिए किसी को, क्या मैं फ्री में ले सकता हूँ क्या, तो वो ऑब्वियसली मना ही करेगा, बट आपने एक स्कोर अचीव कर लेगी, ऐसा आपने ट्राई कर लेगी, आप रिजेक्ट हो जाओ, ऐसे आप 10 बार करिए, 15 बार रिजेक्ट हो। That's wonderful. हाँ, I love this application. रिजेक्टो बोल के, इट्स हाँ. रिजेक्टो। It will give you the confidence also to ask questions. And you may get rejected. We are talking about mental health, Hmm. but now I am thinking that as a person, as a psychologist, how you try to keep yourself, sane, because you are what your surrounding is, right? So if every day I am looking at these things, which is very very hard for our heart, which is not very peaceful to accept, to digest, and there are people who are coming with the extreme cases. So as a psychologist, आप कैसे खुद को मोटिवेट या सेन रखने की कोशिश करते हैं that no I have to emit the positive and good energy? I think it must be tough for you. It is tough. It is. I think I'm going to answer it in two ways. One, there are times I'm not able to do it. So there is no right way to do it. There are You times, are a human being. There right? are times. But what I've learned over a period of time is two things. जैसे काफ़ी लोग मुझसे बात करते हैं, you don't take a long vacation, पूजा, आप कभी लंबा ब्रेक नहीं लेते हो. Now, my entire philosophy in the last 5 years has been that I want to live my daily life in a very structured format. I will preserve my energy. I will ask my body how it is feeling, and I will prioritize where my time needs to go. Every day cannot feel like a big rushed stressed day. अगर constantly आप high stress environment में हो, like you're a therapist or you're a chartered accountant or any job that people are working in, they will feel extremely burnt out. So आपके burnout को manage करना है. That's how at least I have been doing. So I look at my day where, and it will sound very fancy, but yes, I think that is the key. You have to really, really manage your time. You have to get up. You have to go to the gym. You have to take some time out for your breakfast. You have to do really small things. हमने ना आजकल छोटी चीज़ें करना बंद कर दिया है. जैसे हम अपना बिस्तर नहीं लगाते हैं, हम अपनी खुद की चाय नहीं बनाते हैं, हम अपना नाश्ता नहीं बनाते हैं शायद. These micro things help you actually ground. So I will do some of those things. Of course, there is staff available, but I will have my breakfast आराम से शांति से. I will listen to music in the morning. So I'll have a very slow morning because that helps me. Now किसी के लिए शायद वो helpful ना हो, but I have realized that अगर मेरी सुबह अच्छी गई है, I am in a good space. I've recognized that I need to have my hobbies. I need to go for my yoga class. I need to go for my dance class. I have started learning Kathak at the age of 33 now. I still go there. There's tiny girls, but I go with them. It helps me. So I am in office from 9 to 5. 5 o'clock, I actually will clock out. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में जिसमें पूजा की जरूरत पड़ने ही वाली है. कुछ नहीं हो रहा है. I tell my team also and I tell myself also. Second part, I have realized that life is a marathon. It's not a sprint. चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी फैमिली हो, आई विल नॉट फिक्स एवरीथिंग इन अ डे. Nothing is solvable in a day. I'm going to pace it out and figure out. Even when I get clients who are at risk or high intense cases, I recognize what I can do at this point of time and what is not in my control.
I love to separate myself from things, because if you don't separate, you start feeling that everything you control and you're too important and you cannot get out of anything. You cannot make yourself so important everywhere you are, you know. So there's a difference between self-love and self-importance. I love myself and that's why I separate myself. But self-importance I don't necessarily give कि अगर मैं नहीं गई तो क्या होगा, इस friend को बुरा लग जाएगा, इस रिश्तेदार को बुरा लग जाएगा. It is all right, you know. They are adults, they will regulate and I will also apologize. So I try to look at things as the way they are. That really helps me. I also love that I can talk to people about it, you know, in terms of I have family, I have friends. और उनको पता है मैं क्या काम करती हूँ. I very openly tell them, यार आज बड़ा दिन हैवी गया है, मेरे को कुछ और करना है, चलो थोड़ा एक जिम जाके आते हैं, थोड़ा रन करके आते हैं. And they understand it. But these things really help me. So every day should look like a small holiday, you know, at some point of time where you can enjoy some part of life and not taking yourself too seriously. That really goes a long way. So I've seen cases कि यहाँ पे 18-20 साल का बच्चा है और वो एंजाइटी की टेबलेट ले रहा है. नाउ ही हैज नॉट सीन एनी ऑफिस का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई सेल्स टारगेट है या कोई पैसों का दिक्कत है, कुछ भी नहीं है. जस्ट नॉट एबल टू नेविगेट प्रोबेबली Career or या मतलब he is already doing some professional course. The point is somehow he is always anxiety, नहीं मुझे थोड़ा पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे थोड़ा. दो चीजें हैं. At the age of 18-20 how he or she will be like पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे एंजाइटी है. आपको कुछ लाइफ का प्रेशर ही नहीं, एवरीथिंग इज लाइक अम्ब्रेला है. अभी तो पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, बहुत बहुत कुछ हैं, दोस्त लोग हैं, फिर क्यों ये दिक्कत है? So I'm going to answer it in both ways. One is to recognize that mental health challenges, young people experience a lot of it. Their challenges get invisibilized also very often. जैसे ना हमें बहुत naturally आदत है life struggles. See, we come from a country जिसने struggle देखा है. हमारे parents ने काम किया है, तो ना we have seen and we like to talk about it also. हम बहुत अच्छे से फ्रेम कर देते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो इतना कुछ था, तुम्हारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं है. सो एज अ ये हमारे पापा भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, आगे वाले लोग हम उनके साथ करेंगे. सो जनरेशनली वी ट्राई टू लुक एट रिसोर्सेज एंड कंपैरिजन. एंड उस प्रोसेस में ना यंग अडल्ट्स जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो 15 से 22 साल तक के बच्चे हैं, जो कॉलेज में हैं, दे फिगरिंग आउट हु दे आर, आइडेंटिटी, देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस गेट इनविजिबलाइज्ड. क्योंकि वो मेन फ्रंट फोर फ्रंट पे नहीं होते. हमें लगता है अभी तक तो शेल्टर्ड लाइफ है, बट एक्चुअली वो शेल्टर्ड लाइफ में बहुत सारे दूसरे लोग घुस चुके हैं. अगर हम नोटिस करें इन लास्ट 10 years, दीज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विद रिगार्ड्स टू करियर. और ये 18 में शुरू नहीं होता है, ये शुरू हो जाता है आपका स्कूल के अंदर 14 से 15 साल की उम्र में. पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पेरेंटल प्रेशर, यू नो, द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ who needs to be who, I want to be this, you know, what I want to be is a huge chunk of pressure, जिसके बारे में as a population हमें बात करना नहीं आता है. हमें लगता है यार ये तो नॉर्मल होना चाहिए ना, you should be able to deal with it. Second part is there is extreme amount of loneliness at that stage also. A lot of young adults who come to us tell us that they don't feel understood by their people. कि हाँ, मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं. अब ये फीलिंग अगर कॉन्स्टेंटली है तो मतलब सच में कुछ हो रहा है, दैट दे आर नॉट एबल टू बी अंडरस्टूड. या तो उनके पास वो इनफ भाषा नहीं है बताने की कि उन्हें क्या हो रहा है, ना सामने वाले के पास शायद उतना समय, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें क्या हो रहा है. थर्ड चीज़ ये है कि जब हम किसी भी तरह के चैलेंजेस टीनेज में देखते हैं, टीनेज ब्रेकअप्स, वी टेक देम वेरी लाइटली. टीनेज फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स एज अडल्ट, समझ लीजिए अगर मेरा कोई छोटा भाई है, कोई आके बोले 14-15 साल का कि यार मेरा फ्रेंड मुझसे नाराज़ है या उसने मुझसे बात नहीं की है, हमने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, नाउ दैट इज देयर ब्रेकअप. यू नो, हमारा ब्रेकअप अलग होता था, नाउ दैट इज देयर ब्रेकअप. यू डिड नॉट लाइक माई स्टोरी. नाउ इवन द वे आई एम टेलिंग इट, आई एम मेकिंग इट फनी, बट आई नो फॉर दैट पर्सन इट इज नॉट. दे एक्चुअली सी इट एज लॉस ऑफ रिलेशनशिप. एंड देखो, बच्चे हैं रिलेशनशिप्स में, बच्चे हैं फ्रेंडशिप्स में, तो वहाँ झगड़े भी हो रहे हैं, वहाँ डेटिंग भी हो रहा है, वहाँ लॉस ऑफ रिलेशनशिप भी हो रहा है, एंड दे आर गोइंग थ्रू दीज ब्रेकअप्स, दे आर गोइंग थ्रू चैलेंजेस विच वी आर नॉट एबल टू मे बी एक्नॉलेज समटाइम. सो अ लॉट ऑफ यंग अडल्ट्स गो थ्रू चैलेंजेस. रिसर्च ये बताता है कि ऑनसेट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्टार्ट्स इन एडोलेसेंस. ऑनसेट उस इलनेस का या चैलेंज का वहाँ है, दिखता वो बाद में है.
तो challenges पहले से आना शुरू हो जाते हैं. Second aspect what I was talking about is the delay of gratification. So a lot of young adults don't have the skills to regulate themselves. जैसे आपने बोला कि वो हैं 16 से 18 साल के, जैसे आप बात कर रहे थे. They make it, they think that someone will come and rescue me. कोई आके मुझे बचाएगा, कोई आके मुझे करेगा मेरे लिए, इतना तो करना ही चाहिए. I deserve all the love. I should always be loved. Again, these are very important conversations that schools need to have, parents need to have. We have to build resilience. There's a concept in psychology called resilience. Resilience means your ability to bounce back. Okay. कि लाइफ में आप गिरोगे, गिरना पार्ट है आपका, बट योर एबिलिटी टू बाउंस बैक इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट. वो नहीं हो पाता है. वो नहीं हो पाता है. But that is not a subject ना, कभी बात ही नहीं होती. कभी resilience. बात नहीं होती है. Resilience तो कोई सो topic वी आर ही नॉट बिल्डिंग रेजिलियंस. हम बच्चों के लिए AI बिल्ड कर रहे हैं, करियर पाथ्स बिल्ड कर रहे हैं, अकेडमीज बिल्ड कर रहे हैं, हॉस्टल्स बिल्ड कर रहे हैं, बट हम रेजिलियंस बिल्ड नहीं कर रहे हैं. हम एम्पैथी बिल्ड नहीं कर रहे हैं. यंग अडल्ट्स cannot talk, they are ready to talk about emotions, but they don't have that language or medium कि किससे बात करेंगे जाके, right? So we need more of this. We need to sit down with young people and ask what is happening to you. How can you also make it better? How do you want to take accountability? You cannot run away from this. This is happening. Stress हो रहा है तुम्हें. हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना, स्ट्रेस मत लो. मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, you know. कैसे ना ले, मतलब ये बताओ ना. कोई आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं खुश रहो. कैसे? आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स, पूछ लिया करो सामने वाले फूफा जी को, बोले ना खुश रहो. हाउ? बी पॉजिटिव. एक्सक्यूज मी, कम बैक. हाउ डू आई स्टे पॉजिटिव? सो वी आर नॉट हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस, एंड दैट्स व्हाई वी सी नाउ यंग अडल्ट्स आर ब्रेकिंग डाउन much earlier than they could be maybe. Yeah. But see, you know, as an adult, अगर हमारे पास टीनेजर्स, भाई बहन या बच्चे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी बहुत छोटी सी दुनिया है अभी, तो उनको कुछ भी अगर धक्का लगता है तो इट्स वेरी बिग फॉर देम. इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया कि मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही या बॉयफ्रेंड लाइक ब्रेकअप हो गया, एनीथिंग. बट एज एन एडल्ट हमने बहुत दुनिया देख ली होती है. वी कैन सी अ बिगर पिक्चर कि अभी जो तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, ये इट इज नथिंग. मतलब अभी इससे बड़े बड़े इश्यूज आएंगे, यू नीड टू सॉल्व, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये टल जाएगा. बट वो नहीं समझ पाते हैं, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस. उनको लगता है कि आपको क्या पता मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, ये आपके साथ हुआ होता तो. हमारे साथ सब कुछ हुआ होता है, बट हम इतना शेयर नहीं करते बिकॉज हमें लगता है कि दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इस पे इतना फोकस मत करो. सो आई वॉन्ट सम टिप्स फ्रॉम यू दैट एज एन एडल्ट हाउ कैन वी टैकल दिस सिचुएशन, कि वो समझे कि लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ. ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस मत करो, बिकॉज हम जिस लैंग्वेज में समझाते हैं हमारे लाइक चिल करना, कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, इतना सोच मत इसके बारे में. बट आई नीड सम टिप्स कि हाँ वो समझे इस चीज को. Our favorite dialogue is इस पे सोच मत ना, इसको मत ध्यान दे, जाके बाहर खेल के आ, चल शॉपिंग चलते हैं, बिजी रख. I think they are very unhelpful. अच्छा. If they would have worked with a lot of people. और ये already उन्होंने सोच लिया है. See, when people are sharing that something is bothering them, they have first tried to not bother it, let it bother themselves. वो चाहते हैं कि उन्हें बुरा ना लगे, but वो already उस space में है. See, I'll talk to you about now this with an aspect of neurobiology. Whatever you feel, it's a part of your brain's functioning, right? So this is the part. So this is how we explain the brain. That this is your thinking brain. Your brain is divided into two parts. This is your thinking brain. यहाँ से चाचा चौधरी सोचते हैं. यहाँ आप आशीर्वाद देते हो. This is your emotional brain. This is the easiest way to remember it. ठीक है? Okay. Now your emotional brain, whenever you're feeling a lot of things, your emotional brain is active. बायोलॉजिकली ये अंदर हो चुका है सिस्टम में. और आप बोल रहे हो उन्हें सब रैशनल चीज़ें कि ना, जब कोई बच्चा बहुत एग्जाम के पहले एंग्शियस है, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, बाहर पेरेंट्स समझा रहे हैं, नहीं तू भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा, तू सोच ही मत, तू टेंशन ले ही क्यों रहा है. उसका दिस इज योर ब्रेन. जब हम इमोशनल फील करते हैं या एंग्शियस फील करते हैं, एक फ्लैप ओपन होता है. दिस पार्ट इज द इमोशनल ब्रेन. दिस गेट्स एक्टिवेटेड. इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है. And biologically, every time your emotional brain is activated, your thinking brain shuts down. इसीलिए हमारा thinking brain तब बंद हो जाता है, क्योंकि biologically brain को लगता है कि अभी survive करना है, ये brain को active रखो, thinking brain को बंद कर दो. तो when you're giving a lot of this ज्ञान to that person, which is commonsensical ज्ञान, the person is not receiving it. Their nervous system is dysregulated.
they are overwhelmed. They're feeling a sense of anxiety or loss or just absolute sense of control. They want to be held. हम इस नर्वस सिस्टम को कैसे, इमोशनल ब्रेन को कैसे शांत कर सकते हैं? जब हम उन्हें ठहराव दें. और ठहराव कैसे दिया जाता है? आप सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, हाथ पकड़कर, बात करके, पानी पिला के. लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. You seem to be really overwhelmed right now. और आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान overwhelmed है, right? You're like, you understand that You can person. see it that this person is absolutely overwhelmed and you want to give them gyan. So recently एक video viral हुआ है that one person was having an anxiety attack in the flight and one person slapped that the other person. जो इंसान ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है, डिसरेगुलेटेड, वन एक्चुअली किसी को मारना आपके पास हक नहीं है, आप किसी को भी नहीं मार सकते हो, but you slapped that person, that means that person was not okay. You had to do the other thing. You had to actually sit them down, give them comfort, make them feel understood and held, and then talk a lot about these things. So biologically हमें पहले इंसान को ground करना होता है, and maybe in the next couple of minutes I can give you exact tips how to ground the other person. So first is you calm them down. Don't use these things that it's okay, मत सोच, वो सोच रहे हैं. Don't use common sense. Don't use common. Talk to them. Tell me everything that you're feeling. Why was this friendship important to you? Why is this loss making you feel so overwhelmed right now? And as they will start talking, उनको वो rationality अपने आप build होगी. See, आज आप बोल दोगे कि जा इतना important नहीं है, कल उनका सच में जब कभी serious breakup होगा, they're still going to feel that loss. So you have to help them understand to talk to themselves when things are not going okay. So when you talk to them, they learn to talk to themselves also. कि what is relevant right now. अच्छा, 4 चीजें बता मुझे जो आज तू कर सकता है तेरे लिए. Where do you need help with? Is there anyone who will understand what you're going through? Is it bothering you? Is it impacting your studies? Do you feel is it right? And they will tell you it is not right. I should focus on my studies. So you have to let it come through them. You have to talk to them, invite them to talk about it. As soon as they'll start sharing, they'll recognize what they're feeling. Third So it's part, like make them feel that whatever you're feeling, that is absolutely right. Absolutely That all is right. absolutely okay. and let's talk about it. Okay. Third part is then build accountability. Third stage में accountability की बात आती है, क्योंकि now you're feeling this, but जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, आपके बच्चे को बुखार है बहुत तेज और उसकी 10th बोर्ड की परीक्षा है. एज ए पेरेंट आप क्या करोगे? आपके पास 3 ऑप्शन है. एक है यू गोइंग टू बी एब्सोल्युटली प्रोटेक्टिव, नहीं तू परीक्षा देने जा ही मत, कुछ नहीं होता है, लाइफ में सब अच्छा है, बैठे रहो आप घर के अंदर. सेकंड, ऐसे कैसे बुखार हो सकता है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी पॉजिटिव, डर के आगे जीत है, जाओ एग्जाम देने के लिए, कुछ नहीं होता है. थर्ड, तुम्हें बुखार है, मुझे पता है, आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू राइट द पेपर, सो आई एम गोइंग टू स्टे आउटसाइड your exam room. You write how much ever you can. I trust that you can do well in this exam. We have to separate. Today we have to separate. I'm going to be sitting outside, and as soon as you're done with your exam, we are going to go home. Or the moment you feel that I'm not able to write, we can go. We can go home. Exactly. Absolutely. This is where we need to be. We need to build accountability and support. We don't have to take our children out of the problems. कुछ नहीं होता है. हम उस बॉयफ्रेंड को कॉल करके डांट देंगे, उनका फोन ले लेंगे, उनके अकाउंट्स बंद कर देंगे. How is this helping your child? Is it developing any solution focused skill? No. Your child is not learning how to solve their problems. True. So you have to do these 3 things. Listen to them, not use these sentences, not dismiss their feelings. Really help them ground in that minute. Give them that holding. If you can hug them, sit with them, really look at them. Make that eye contact, that I see you, you're valid. And then talk about accountability. What can you do for yourself? You're feeling these big emotions, I get it, but we have to do something about it. Let's go for a walk. Let's try to do something else. These are the 3 things that can help. Actually. You have to dilute with them first. Yeah. And then make your point. Absolutely. Yeah. Absolutely. Do you think spirituality has a role to play? Absolutely. As an adult, अभी मेरी टीनेज में ये सब दिक्कत शायद मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं था, मुझे पता भी नहीं चला कि ये सब दिक्कत है या नहीं है, बट वो सेल करके रीच समवेयर. अभी आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप अपने क्लाइंट्स को या जो भी टीनेजर आते हैं, जेन जी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी एज ए सॉल्यूशन देते हो
या हाँ। या स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में हेल्प कर सकती है? रिसर्च ये बताती है स्पिरिचुअलिटी हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर सेंस ऑफ वेलबींग. ये है, इट इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज गिवन. नाउ हाउ वी यूज इट इज एब्सोल्युटली वेरी सब्जेक्टिव. हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, but there are people who talk about being spiritual and how it helps them, how it grounds them. Now, there are certain practices, there are certain meditative practices, there is faith, there is belief, and there is a lot of also confusion between being religious and spirituality, right? Hamare culture mein there is a mixed blend, and it's okay. I think I love that aspect of my culture, that we have something to hold on to, and Yeah. people have their own things to hold on to. So therapy will never neglect anything that is working for you. I see. Okay. For example, we have had clients who will tell me, a 50-year-old woman talking about extreme depressive symptoms, but also talks about she's Jain. As soon as Chaturmas comes, she will go to the temple और वो महाराज साहब के पास जाएंगी, उनको बेहतर महसूस होता है. उनको होता है बेहतर महसूस. So we use that कि आप वहाँ जाते हो, आपको क्या फील होता है. Just remember that experience, and can we try to do that at home also? Now that is just one very very vague example I'm giving you. We try to use what is working for you. So coming to your first aspect of the question, spirituality has a lot of research that talks about its association with well-being. It helps you ground. It helps you look at life in a larger lens. It helps you look at yourself, that you are not the only bigger person in this world. You know, there is a larger system and everything is all right. Don't give much importance to yourself. हाँ, exactly. So spirituality definitely आपको वो grounding देता है, sense of community भी देता है. You know, समझ लीजिए अगर आप एक religious group से हैं, now I'm moving beyond spirituality, now I'm talking to spiritual religious practices. There are people who perform these spiritual religious practices. It makes them feel that they're connected to a larger purpose. Yeah. जब तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं, they feel that drive. लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, you know, जो walk नहीं कर रहे हैं. I have seen my parents doing it. There's a bigger purpose attached to it. There's a drive attached to it. So I always tell that this your body had so much capacity. I'm so proud of you. So I never say कि आप मंदिर तो चढ़ जाते हो, आप treadmill क्यों नहीं जा रहे हो? There is a reason that they will do that. So we have to find ways to use that and see if they can find ways to do this similar thing in other ways of your life. So to Gen Z or to people, we do talk about mindfulness. We do talk about Buddhist psychology principles, where you separate yourself from the bigger, you know, purpose. You build bigger purpose and meaning, but not immediately, because they're not ready with that set of thought sometimes. But yes, clients talk about spirituality in India all the time. It cannot be taken out of the therapy work. It is part of the therapy work. Yeah. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आज हमने क्या किया है, शायद जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना, उसको बहुत बड़ा बना दिया. मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद बहुत लोग इससे एग्री नहीं करेंगे. मतलब हम छोटी छोटी दिक्कत को, जैसे यहाँ आए थे हम लोग, तो हमको मराठी नहीं आती, हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, क्योंकि हम तो गांव से हैं. हमको इंग्लिश मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से सीखा है. तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. उसका जेन्युइन सॉल्यूशन है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे. बट आज की डेट में लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उसका होवा बना के रखा हुआ है. बट मेरे लिए क्या है, मैं मंदिर जाता था, तो मतलब मैं साल में 4-5 बार मंदिर चला जाता, तो मेरा सब कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब मैं बहुत मानता हूँ, तो मैं फॉलो करता हूँ कि यार जो होगा ना, ऊपर वाले ने जो देना होगा वो देगा. हमारा काम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आप कर्म पे आपका जोर है, फल पे आपका जोर नहीं. क्या होगा, बट हाँ, आप घर पे बैठ जाओगे कि यार जो होगा देखेंगे, मैं तो भगवान भरोसे बैठा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा. हाथ पैर दिमाग भगवान इसीलिए दिए हैं कि भाई तेरे को कुछ भेज रहा हूँ, तेरे को कुछ करना है. वो करते हैं, विल सी क्या होता है. बट उसने मतलब मेरे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व कर दी. मतलब हर जगह आपको रिजल्ट, जैसे एपिसोड स्टार्ट हुआ था, यू मेंशन कि कोई भी चीज एक दिन में सॉल्व करने वाली, बहुत सारी चीजों को आप कल के लिए छोड़ दीजिए. तो मैंने भी मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ी है कि यार ठीक है ना, देखेंगे बाद में जब होगा. तो हम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, जिसे बोला जाता है कि हाउ कैन आई, माय कैपेबिलिटी इन टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स दैट आर देयर इन माय लाइफ, my capability of solving problems in my life is my self-efficacy. Now, there are people who are high on self-efficacy. There are people who are low on self-efficacy. Over a period of time, they realize that, oh, I can take charge and take care of things in my life. But if they grew up in a home where every small thing became a huge thing, कि घर में आप गलती कर ही नहीं सकते, और मम्मी हमेशा डरी हुई रहती थी, पापा हमेशा नहीं अपन नहीं जाएंगे बस से, बस में कुछ हो जाता है 4 घंटे पहले जाएंगे अपन बस स्टेशन. So we'll come from different homes
different types of experiences. Now, people who went through partition, people who went through wars, people who went through different physical, mental health challenges, people who went through a lot of financial troubles, हम सबका temperament अलग-अलग घड़ा है. तो आज हम जो हैं हमारे childhood experiences का outcome है. तो शायद सबके साथ वो fit नहीं करता. So therapy is a solution for mental health issues, right? Hmm. I wanted to know कि therapy can be a solution for betterment. Absolutely. मेरे इमोशन को मुझे अच्छे से हैंडल करना है. So I want to grow emotionally. Logically मैं बहुत अच्छा हूँ. मुझे emotionally थोड़ा grow करना है. So therapy is a solution for that. Right? Absolutely. So a lot of our clients recently we see this trend that people are investing in their wellness. जैसे हमारे physical health वाले sector में भी एक बदलाव आया है. People are investing in good food, physical health regime. Similarly, a lot of, at the moment we have a lot of CEOs, high performing leaders, managers coming to seek therapy to improve themselves, to understand themselves better. People are coming in to understand that can I take care of my emotions better? Can I train my brain for better things? Can I look so at... there is no problem. There is they no are not problem. feeling any problem with Yeah. their mental. There are no this thing. mental illnesses. But they just want to grow. Absolutely, improve. absolutely. So Oh, we have a lot nice. of movie directors, actors, performers, because उनको constantly अपने emotions के touch में रहना पड़ता है. So therapy is for everyone in a way, when you feel ready for it. I will not say that go to therapy today itself to everyone who's listening to us. But if you feel, 3 things. If you feel that life में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे किसी से बात करनी है. अगर thought आ गया है ना, मतलब आपको बात करनी है. सेकेंड, अगर आपको लाइफ में लगने लग जाए कि आप सब चीज़ें कर पा रहे हो बट कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है. You don't feel content in your relationships, in your work. You're constantly, you feel like you're running after something but you don't know what. Maybe you need to understand and clarify things for yourself. Third, you feel like now I am in a stage in life where I have time and mind space and money and resources. I can invest on myself. I want to talk about myself. I want to understand myself better. I want someone to help me make sense of my world better. Nowadays people are facing a lot of mental issues. मुझे जो बहुत कॉमन लगता है वो ये कि हर इंसान को समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उससे स्टेप ही नहीं उठाया जाता. वो उसी ग्लूमी स्टेट में उसी में ही बस सोची जा रहा है, स्टेप नहीं ले पा रहा है. एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे आपसे ना कुछ सिंपल टिप्स चाहिए कि अगर अनुष्का आप ये भी डेली कर लोगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी. एंड दैट्स वेरी स्मॉल थिंग्स. एंड हो सके कि ये मेंटल इश्यूज आगे इंसानों को ना आए. तो व्हाट आर दोस स्मॉल टिप्स? So I will talk about them again in different categories. One is आप mental health is a part of your physical health. दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है तो उसे अलग से ऐसे separately treat मत करो. Work on your entire body, you know. So while I will not say that exercise solves everything, but exercise does take care of your body and does lead to good secretion of feel-good hormones, serotonin, dopamine, and will make you feel better and more ready to deal with challenges in a day-to-day life. So taking care of your physical health, going to the doctor when needed, doing your tests regularly, making sure your vitals are in place, making sure you're sleeping well, making sure you're working out, some amount of movement. चाहे फिर वो डांस क्लास हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, बट यू मस्ट फाइंड वेज टू मूव योर बॉडी एवरी सिंगल डे. ठीक है, दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. उसी में ऑफकोर्स आपका खाना भी आ गया ना. इन फूड आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट योर गट एंड योर ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग. तो अगर आप बहुत लेट खाते हैं, शराब पीते हैं, या बहुत अनहेल्दी खाते हैं, या फिर बहुत गैप्स में खाते हैं, इट इज़ इम्पैक्टेड ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. And your digestive system is directly always communicating with your brain. So if your gut is not healthy, you're experiencing a lot of gut challenges, you're likely to experience more stress, induced anxiety, overwhelm, emotional dysregulation. It is part of that, right? So your brain is a part of your body, always remember that. So your body needs to be taken care of. Second part is some amount of self-care. Now self-care is not what Nykaa is telling you. Put on the best eye patches. Do that if you want to. But self-care is actually looking at what your body needs at different points in time. Sometimes your body needs something to achieve. You know, that painting or that going and doing that office और सारा to-do list खत्म करना, आज देर तक काम करना है. Sometimes you need that. Sometimes your body needs rest. Sometimes your body needs time. कि आप धीरे धीरे अपना दिन शुरू करो, आप किसी से बात करो,
आप थोड़ा सा गाना सुनो, आप दिन के अंदर अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक दो, ताकि जो रात को जब आप जगते हो, जो यूजुअली हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि आप रिवेंज करते हो अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मुझे दिन भर टाइम नहीं मिला, अब रात को पूरी दुनिया सो चुकी है, अब मैं फोन चलाऊंगा, अब मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा। नेटफ्लिक्स भी चाहता है आप रात को चलाओ। दे वांट टू क्रिएट, वो चाहते हैं ना कि आप राइट काइंड ऑफ शो देखो ताकि आप हुक हो जाओ उस ऐप पे और आप कॉन्स्टेंटली देखते रहो। फिर ब्लिंकिट आपको बोलेगा वी विल डिलीवर दिस चॉकलेट इन 12 o'clock इन द नाइट ऑल्सो। सो दे वांट यू टू कंज्यूम कैलोरीज, सुगर, stay up in the night. You have to fight a lot of these distractions in self-care. Your body needs to rest. Your body does not need to watch that reel before you are sleeping. So all of this is a part of your self-care. आप ये नोटिस करो कि आप दिन में जो भी चीज़ें करते हो, आपकी बॉडी को वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। जस्ट रिकॉर्ड योर डेज कि आपने पूरे दिन में आज क्या क्या किया, and just tick mark things that contributed to your body, tick mark things that you just did it क्योंकि कर रहे थे, and you will realize a majority of the chunk is you're going with life. So जब आप सेल्फ केयर करेंगे थोड़ा आप में ठहराव आएगा। इंटेंशनल सेल्फ केयर कीजिए ताकि आप नायिका और इनसे बेहतर निकलकर आप खुद के लिए कुछ कर सकें, राइट? थर्ड पार्ट इज, सो वन इज बॉडी, वन इज सेल्फ केयर। थर्ड पार्ट इज देन लुकिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर इमोशंस थोड़ा केयरफुली। कि अगर देखिए दो चीज़ें हैं, हमारे थॉट्स और इमोशंस एक वेव्स की तरह होते हैं, आते हैं और जाते हैं। वी डोंट हैव टू इंडल्ज इन एवरीथिंग दैट वी आर थिंकिंग और वी आर फीलिंग। वी हैव टू लुक एट आर मेंटल हेल्थ, आर थॉट्स, आर इमोशंस एज एन आउटकम ऑफ सर्टेन रिएक्शंस और एक्सपीरियंसेस। सो वी हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड देम बेटर। अब वो करोगे तो क्या फ़ायदा होगा? आप बेहतर रिस्पॉन्ड करोगे। समझ लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक बुरा सा मैसेज भेजा और आप मंडे को सुबह सुबह ऑफिस आए हो, मंडे वैसे भी स्ट्रेसफुल डे होता है, और एक गंदा मैसेज आ गया है एंड अब आपको बार बार गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है मुझे अब रिप्लाई करना है इसको। नाउ दैट वन मैसेज इज अ ट्रिगर, इट हैज इम्पैक्टेड योर थॉट एंड योर इमोशन एंड योर बिहेवियर इन ऑफिस। यू हैव टू लर्न टू डिसएंगेज विद सर्टेन इमोशन सर्टेन टाइम। हमें सीखना होगा कि उस वक्त जो चीज़ हो रही है वो अब हमें इमोशनली इम्पैक्ट करेगी। और ये कैसे आएगा? जब आप अवेयर बनोगे किसी दिस मैसेज मेड मी स्मॉल, एंग्री, एंड नाउ आई एम अपसेट एंड माई थॉट हैज बिकम नेगेटिव, और आई एम जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, और आई एम गोइंग टू यूज मोर सोशल मीडिया टुडे। अब मैं ज़्यादा टाइम पास करूँगी, मन नहीं लगेगा काम करने में। यू हैव टू अकाउंट दैट एंड एक्नॉलेज कि ये थॉट आया है। आई एम गोइंग टू डिसएंगेज, आई एम गोइंग टू लुक एट इट एट 6 o'clock. I'm going to come back to you at 6:30. और आप ये मैसेज लिख के छोड़ दो, अगर आपको उससे शांति मिलती है, आई विल गेट बैक टू यू एट 6:30. या अपने नोट्स में लिख लो, गेट बैक टू दिस पर्सन एट 6:30. राइट? सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट योर इमोशंस एंड थॉट्स, नॉट ऑल ऑफ देम आर वैलिड एंड नॉट ऑल ऑफ देम नीड टू बी एंगेज्ड विथ। ये कुछ ना कुछ होती रहेंगी ना चीजें जिससे हम रिएक्ट, ट्रिगर होते रहेंगे. So we have to learn to respond, not react. So if someone tells me something, this looks very easy. It is very hard. It seems very easy, but if you start practicing it, honestly, first step is awareness. So I'll give you a real-time example. How do I teach it to clients? Identify your trigger. Identify the stimulus that impacted you. It can be sometimes a message, sometimes a person, a message that you did not get. What you were expecting, they did not reply that. किसी पर्सन का बॉडी लैंग्वेज, उसने आज आपको हाई नहीं बोला, वो चली गई ऑफिस के अंदर डायरेक्टली. हम हर चीज को रीड करते हैं, ह्यूमन बींग्स का नेचर है. वी मेक मीनिंग आउट ऑफ एवरीथिंग. ये पौधा रखा है तो क्यों रखा है, उसने बात की तो क्यों की, क्या नहीं की. वी रीड एवरीथिंग. हमें कई बार उसको वहां पे जब वो थॉट आता है वहीं पे फिल्टर करना है. मोस्ट ऑफ आवर थॉट्स आर कॉल्ड नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स. हम मोस्टली नेगेटिव ही सोचते हैं जब हम रीड करते हैं. ये इंसान का नेचुरल तरीका है. हमें वहीं उसको न्यूट्रल करना है, पॉजिटिव नहीं सोचना है. ओके, उसने ये नहीं देखा मेरी तरफ, मुझे बुरा लगा और मैं कंफ्यूज्ड हूं कि उसने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, बट आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू दिस थॉट. अवेयर होकर खुद के थॉट को चेंज करना, रेगुलेट करना इज नीडेड. नहीं तो हम कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करेंगे ना.
हमारे एनवायरनमेंट हमारे में आज इमोशंस दूसरों के एक्शंस पे बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे. Yeah. विल बी कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन आवर एनवायरनमेंट. और लाइफ में तो सब कुछ अच्छी चीजें नहीं होगी ना. सब सही रिप्लाई नहीं करेंगे, सब अच्छी बात नहीं करेंगे, सब हंस के जवाब नहीं देंगे. So you have to disengage thoda and regulate your thought, become that neutral. Okay, I don't have to think positive about that person. It is okay. She did not I always tell, look at the situation the way it is. What happened? She did not say hi to you. That's it. Don't read anything until you communicate. And until don't you frame a read. story. Don't frame a story. Don't Stay overthink. there. Don't Stay overthink. where it is. When you need it, you will go into it. हमें लगता है ओवर थिंकिंग एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का. ओवर थिंकिंग इज थिंकिंग अबाउट वन थिंग ओवर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज एंजाइटी. It becomes over the period becomes anxiety. Absolutely. So we have to, this is what I just told you, become aware, neutralize and then respond. So हम हमेशा Respond बोलते हैं when you are okay with your emotions. absolutely, you have to pause. You don't have to respond to everything, and sometimes you will. As human beings आप react करेंगे, but then learn, then come back, take a step back. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने कभी रिएक्ट कर दिया किसी टीम मेंबर पे, या मुझे अचानक कुछ किसी ने बोला कि मैम टुडे आई विल नॉट बी एबल टू कम, एंड यू फील एंग्री दैट यू नो यू हैड प्लान्ड सो मेनी थिंग्स. मैसेज लिखने के पहले आई पॉज. आई सेड आई नो पूजा, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, विल फिगर इट आउट. इसको पहले यहाँ बोलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट गेट बैक टू मी बाय टुनाइट. I would want to plan my next day properly. So I'm not saying that I will not take care of them, but I also have to take care of my organization. And they also are adult and they will have to tell me. So I will need their help to make it work. That's it. So we have to pause and then respond. But now I am also realizing one thing that जैसे आपने कहा कि junk food and this unhealthy food कितना ज्यादा ये ब्रेन पे भी मैटर कर रहा है. हमें लगता है कि सिर्फ हमारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, बट समवेयर इट इज हार्मिंग आवर ब्रेन आल्सो. Absolutely. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू व्हेन वी फील सैड इज दैट वी Binge eat. Stress eat. we eat junk. Yeah. So it's kind of a loop that we have to have a control over our mind. It's like कि जैसे कहते हैं ना कि माइंड, हमें माइंड को कंट्रोल करना है. देखिए, जैसे आपने बोला माइंड और गट कनेक्टेड है. जैसे ही हम स्ट्रेस फील करते हैं, we look for that sugary drink, Correct. coffee, Junk. something junk, कुछ अच्छा खाते हैं, मूड अच्छा something करते that हैं. will immediately release glucose in your blood. Because True. body में cortisol release हो गया है, you want something to bring it back, bring it down. But it's a temporary solution. Temporary. And it's a loop. आप loop में फंस Absolutely. जाओगे उसमें. Absolutely. So drink water at that time. Very difficult, but drink water. Have that piece of chocolate maybe, not go for the entire bar. Recognize that अभी आप emotional हो. आपको अपने पैटर्न्स भी समझ में आएंगे. Indeed, in therapy, we also talk about neurobiology of food. We help people understand what are your patterns of binge eating. आप रात को करते हो, आप दिन में करते हो, आप Netflix देखते हो करते हो. So people have patterns. So most people, research says most people when they are watching social media or Netflix in the night are likely to consume more unhealthy food. Actually, yeah. Not healthy food. घर में कितना भी होगा, but they will go out for that chips का bag. True. Because they feel it is comforting. क्योंकि Netflix आप देख रहे हो अपने आप को comfort कराने के लिए, pleasurable activity है. उस pleasurable activity को और pleasurable बनाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज खाते हो जो आपको उस वक्त अच्छा फील कराएगी. But if you watch that Netflix with your partner or with someone, it may become more pleasurable. You may not go for that bag of chips. So we are also sitting in our rooms with our own laptop and watching things. So things have made us more isolated, to be very honest. क्योंकि हम वो साथ में बैठ के नहीं देख रहे हैं ना वो टीवी अब. हमने मूवी थिएटर में जाना बंद कर दिया है. हम अकेले बैठ के देख रहे हैं. अकेले बैठोगे तो आप कुछ ना कुछ खाओगे. Quite possible. Few books which you would recommend as an therapist कि हर एक इंडिविजुअल को लाइफ में कभी ना कभी थेरेपी की जरूरत पड़ती है. Some will come, some will not come. That's the only difference. मतलब probably major ratio is like nowadays we are shifting कि let's go to a therapist. Otherwise people avoid to go to therapist. यार क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे ऐसा. कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको लगता है कि यार these are like manuals. If you'll read, probably chances are better chances that you will. I often recommend this book, Wisdom of Anxiety by Sheryl Paul, to a lot of my clients who experience anxiety. ये anxiety को देखने का नजरिया बदल देती है किताब. Rather than an illness, you see it as a survival mechanism. That it's a response of your body and how you can use it to your strength.
how you can understand it better. So that's a great book. There's another book called Maybe You Should Talk to Someone. That's a The great, name itself. the name itself is Maybe You Should Talk to Someone. It simplifies every psychological challenge a living human being will experience on this planet. A great book. There's another book called, that's slightly little complex, is Body Keeps the Score. If someone who's interested in understanding how trauma impacts body, nervous system, how to regulate your nervous system, so they can use Body Keeps the Score. That can help people understand their muscle memory. I was talking about all the limbic system, frontal cortex, all of that in a very simplified way. There's another book, Don't Believe Everything That You're Thinking. Actually, Now again, that talks about how your thoughts are not always valid and you can look beyond them, and they don't need to be kind of solved every time as you're experiencing. There's another book for relationships, How to Be an Adult in a Relationship. I really like that book and I recommend to a lot of couples who are experiencing challenges with relationships. There's a book named Attached that speaks about, जो मैं attachment styles के बारे में बात कर रही थी, how to understand your attachment styles and how to work on them. There's a book that speaks of the book that I hope my parents would have read and my children will be grateful that I read. That speaks about parenting and how to not bring your intergenerational trauma in your parenting when you're parenting your young children. What's the name of? The name of the book is the book that I hope my parents would have read, and Achha. my children will be grateful that I have read. I don't remember. It's a long name, but Ah. I can put that on the caption maybe or in the details. There's another book called All You Need Is Love by Shailaja Sen. It's a beautiful parenting book. I love her writing, and again a beautiful book on parenting. The list is very long, but these are some of the books I remember right now. Yeah. I have plenty of lists. Maybe we can also do another segment just on books and I can bring all of them here and show Very it. interesting. Yeah. Because your books are like, I'm a habitual reader. मतलब मुझे पढ़ने का शौक है. But ये जो book बताई उसमें से एक को छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं देखा है. We have a lot of books. So you must come to our office, Safe Stories. We have a section on just children's books. So adult books, comic books. We have Brené Brown is a great writer. She wrote on Daring Greatly. She has a lot of leadership content. She has a book called Atlas of the Heart. It's a beautiful book that speaks about understanding these complex emotions like shame, jealousy, vulnerability. Beautiful book. So it's Atlas of the Heart. And Daring Greatly is a great book again for leaders who want to understand empathetic leadership. Great book by Brené Brown, and her TED Talk also, The Power of Vulnerability, is beautiful. One must listen to that TED Talk at given a point of time. So पूजा, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया. एंड आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हमको पेन होता है तो इमीडिएटली टेक पेन किलर, कॉम्बिफ्लेम और एटसेट्रा टैबलेट्स. बट नो वन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड it's an important issue. And it is going to be a very important issue. Yeah. Now tell me your success stories. जहाँ पे आपने client को बहुत critical moment से निकाला है. You don't take, you will not take names obviously, but if you want to share, if you can share easily. Yeah. So I'll talk about some of the important things which talk about success of therapy. एक है, देखिए success of therapy ना है कि the client has come back. I always believe that I have had situations where clients reported suicidal thoughts and I wondered whether they would come back, but they came back. For me, that they returned and they trusted me is success. Another part is, I will come to the exact stories, but just giving you indicators that therapy is going well. When a client is able to share the most intimate and personal secret of their life, which they never told anyone, and I feel that they could trust me to cry in a session. They could trust me that this is a safe space and they can be themselves. That's a success story as a therapist. Another success story is when we are able to bring other family members of their life and actually talk about their challenges. जो उन्होंने लाइफ में आज तक किसी को नहीं बताए हैं. Slowly we are able to make the entire family recognize the challenges that they are going through. Their parents, their siblings or partner or children, and actually see it happening, So I have seen a lot of great moments in my life as a therapist where a new mother is taking therapy and the father is sitting with the 2-month-old baby outside and they're discussing how she's going through postpartum depression and how the father is also unaware what to do, but they're together.
So I think some of these moments when I look in the therapy office, they really move me. So they're all success stories for me. But coming out with some specific things, we have had people with extreme challenges related to health anxiety or just anxiety where they could not function in their workplace. They could not go to their jobs. They found it very difficult to trust anyone. And COVID made it worse in that period, you know. So I remember a lot of my clients with Safe Stories eventually started going back to work, started building that trust in themselves, started taking flights, started going out and meeting people, grew up in the leadership ladder, took up roles which were extremely challenging for them, which they thought they will never be able to take. You know, for someone who never left the house to soaring in the world is a huge shift, right? So that was extremely beautiful to watch. We have seen young kids, teenagers walking in therapy room with absolute lack of trust with anyone in the world, a lot of difficulty in expressing their emotions. They kind of indulged in some form of self-harm. They would cut themselves when they felt a lot of anger, emotions. So from self-harm to self-love, from self-harm to recognizing that they can learn to love their body, they can build trust out in the world while they had this mental health illness and diagnosis, but to still exist, to be able to talk about their illnesses. And I have seen a lot of my clients have started support groups where they started talking to other people who had mental health challenges. So that was really interesting to watch, that when they got better and, you know, they figured out what helped them, they started doing that for their other people. And I think that really moved me. डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ खत्म हुआ, अलग एंड है. और पर्टिकुलरली एज अ पर्सन मुझे भी बहुत सीखने को मिला, हमें भी बहुत सीखने को मिला कि यार इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वंस लाइफ. सी पीपल एज अ पीपल, नॉट एज एन मशीन. Kindness is one thing, empathy is another thing. So basically, I just wanted to say thank you from deep down my heart. Thank you. Thanks a lot. And you wanted to say something? Yeah, I will just say this to you both. I really appreciate the genuineness you both brought to the conversation. क्योंकि mental health can be either reduced to anxiety, depression, या फिर एकदम ही हम spiritual या ambiguous, you know, बातें करने लगते हैं. I felt it was a mixed blend of everything. So thank you for respecting my experience journey and holding your genuineness by listening to me. I think that was a great, great joy to be able to talk about something like this. Thank you.